Okay, so friends, let's start our next lecture on energy and environment. And you are watching the lectures which we are taking for HPCL exam. And this lecture is the fifth lecture on energy and environment. And in this lecture, we are going to take the questions. बहुत से क्वेश्चंस करेंगे. मेरे पास एक 70 क्वेश्चन का लिस्ट है जो हम आज डिस्कस करेंगे. 70 क्वेश्चंस विच आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. नोट करते जाएं आप एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता लगते जाएंगे विच वी आर गोइंग टू डू. So I was telling you like these are some additional topics in HPCL exam. HPCL, if you are going to write with mechanical engineering, these are the topics which are going to come. And in today's these are additional topics of HPCL. And in today's lecture, I'm going to take the questions from this topic, that basics of energy and environment. तो ट्राई किया गया है पूरे टॉपिक्स को कवर करने का. कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, climate change, environmental impact assessment. So I've tried to cover all the topics from this, and ये सारे के सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस होंगे. आप अंडरस्टैंड करते जाना बिकॉज इट इज मोर रिलेटेड टू क्वेश्चन सॉल्विंग. सो मैंने पूरे टॉपिक्स में से क्वेश्चन उठाए हुए हैं, इनको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. So which convention was adopted for protection of ozone layer? So which convention was adopted for protection of जो ozone layer? So मैं आपको आंसर भी साथ ही साथ दे रहा हूं, आप अंडरस्टैंड करते जाओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट. सो ऐसा कौन सा कन्वेंशन था जो ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन से रिलेटेड था? लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, देयर आर टू थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर रिलेटेड टू ओजोन लेयर. ओजोन लेयर हमने डिस्कस किया था, ये ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस करने वाला गैस भी है, बट इट इज इन द स्ट्रेटोस्फियर. सो ओजोन लेयर इज इन द स्ट्रेटोस्फियर एंड दैट इज द रीजन it eventually does not affect the global warming much because it is in the stratosphere. But then there are some substances like chlorofluorocarbon. So these are the substances which destroy the ozone layer. Now there are two conventions, in fact protocol plus convention, which are related to ozone layer. एक उनमें convention है आपका Vienna convention and another is a Montreal protocol. But he has asked you convention and not protocol, थोड़ा सा difference होता है दोनों में. हाय राहुल, प्रणाम. सो वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दो होते हैं जो ओजोन से रिलेटेड हैं फ्रेंड्स, और ये दोनों आपने याद रखने हैं. तो वियना कन्वेंशन 1985 में हुआ था और ये ओजोन लेयर से रिलेटेड था. सो वियना कन्वेंशन रिलेटेड टू ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना. तो वियना कन्वेंशन related to ozone layer is important. And the second I told you is Montreal protocol, which came in force in 1989. And Montreal protocol is also related to ozone layer, but depleting substances of ozone layer. ऐसे substance जो ozone layer को deplete करते हैं, तो ये important है related to Montreal protocol. जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेंट में यूज होता है, जो एज अ रेफ्रिजरेंट यूज होता है. सो दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, वो एक ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंस है. एंड ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंस होने के चलते एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था उससे रिलेटेड इन 1989, एंड दैट प्रोटोकॉल इज कॉल्ड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. सो दैट प्रोटोकॉल इज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो उससे रिलेटेड साइन हुआ था. तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड रिलेटेड टू this ozone layer depleting substance. अगर depleting substance आए तो Montreal protocol, otherwise अगर convention आए Vienna convention. So that is one thing you should know. And Vienna convention was in 1985, which was the first convention, and Montreal protocol was in 1989. ये दो चीज आपने याद रखना है. After that friends, Stockholm convention on persistent organic pollutant. तो ऐसा कौन सा convention है जो persistent organic pollutant से related है? That is Stockholm convention. That is related to Stockholm convention. So Rahul, actually YourPedia का पूरे का पूरा एक मॉड्यूल है इसका HPCL का, और वो sufficient मॉड्यूल है. पिछली बार भी उसी मॉड्यूल में से सारा आया था. एंड YourPedia में ये HPCL का डेडिकेटेड मॉड्यूल 4th time it is being conducted, 4th time. So you can take that particular module of HPCL on YourPedia, and this is being covered 4th time. So
ये आपका सफिशिएंट मॉड्यूल है, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन इज ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, और कब ये आया था? दैट वाज इन 2004। और क्या होते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट किसको बोलते हैं, क्या होते हैं ये? दैट यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट क्या होते हैं। एज ऑफ नाउ यू अंडरस्टैंड परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से रिलेटेड जो कन्वेंशन था दैट वाज स्टॉकहोम कन्वेंशन, और वो 2004 में आया था। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2004 में आया था। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से रिलेटेड ये कन्वेंशन था, राइट। होता क्या है परसिस्टेंट? परसिस्टेंट इज लगातार जो चला रहता है। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट कौन से होते हैं, इनमें से कौन सा परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है? दैट यू शुड नो which one is the persistent organic pollutant, and these are the chemicals that remain intact in environment for long duration of time. So longer time के लिए ये persist करते हैं, ये आपके longer duration तक आपके environment में रहते हैं, इसलिए इनको persistent organic pollutant बोलते हैं। They are called persistent organic pollutant because they remain in environment for longer duration. They remain in the environment for longer period of time. Okay, now next is Rotterdam Convention, and it was established to trade with hazardous chemicals. So Rotterdam Convention is related to the hazardous chemicals. Hazardous chemical, and then you have to remember Rotterdam Convention. नाम आपने याद रखने हैं, जैसे वियना कन्वेंशन इज ओजोन सब्सटेंस के साथ, रॉटरडम कन्वेंशन हैजर्डस केमिकल्स के साथ। हैजर्डस केमिकल और पेस्टिसाइड्स इंटरनेशनल ट्रेड में। तो जब भी आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना है इन केमिकल्स विच कैन बी हैजर्डस केमिकल्स, जो एक्सप्लोजन में भी यूज होते हैं, या आपको पेस्टिसाइड जो ह्यूमन हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकते हैं, इफ यू वांट टू ट्रेड देन देयर इज अ कन्वेंशन व्हिच इज फॉलोड। देखो होता क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे व्हेनेवर यू आर टू डील विद समथिंग, यू आर टू ट्रेड इन समथिंग एट द इंटरनेशनल लेवल, देन यू नीड टू साइन सम कन्वेंशन, यू नीड टू फॉलो सम एग्रीमेंट। जैसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बहुत से कन्वेंशन है जो न्यूक्लियर ट्रेड में यूज होते हैं, तो आपको वैसे कुछ कन्वेंशन फॉलो करने पड़ते हैं जो आपके इंटरनेशनल ट्रेड करना है अगर किसी फील्ड में, तो उससे रिलेटेड है। तो रॉटरडम कन्वेंशन उसी से रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू हैजर्डस केमिकल्स। बेसल कन्वेंशन किस लिए यूज होता है? बेसल कन्वेंशन डील्स विद व्हाट इज बेसल कन्वेंशन? एंड बेसल कन्वेंशन एक कन्वेंशन और उसके साथ का एक नाम, तो हैजर्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। बेसल कन्वेंशन इज रिलेटेड टू हैजर्डस वेस्ट and their disposal. Friends, we are going to do 70 question today. So Basel Convention was adopted in 1989 by Conference of Plenipotentiaries in Basel, Switzerland, and आपको बस याद रखना है Basel Convention is related to hazardous waste and the disposal. Hazardous waste and disposal से related Basel Convention है। ओके कल हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आपको याद होगा 1992 में अर्थ समिट हुआ था, अर्थ समिट इन 1992, जिसको रियो डी जेनेरो समिट या अर्थ समिट भी बोलते हैं। और ये पहला ऐसा समिट था, पहला ऐसा मीटिंग था जो एनवायरमेंट चेंज के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर हुआ था 1992 में। और उसमें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्रिएट हुआ था, यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसी में क्रिएट हुआ था। और उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होता है ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर ही होता है। तो ये बेसिकली किस चीज से रिलेटेड था? ये ग्रीन हाउस गैसेस या ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना, मिटिगेट करना, कंट्रोल करने से रिलेटेड था। क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड था। स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, इट इज रिलेटेड टू स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। So United Nations Framework Convention on Climate Change
It came into existence in June 1992, and the purpose is to stabilize the greenhouse gases concentration in atmosphere. Okay, now conservation of migratory species of wild animal, which convention is related to that? तो जैसा मैंने आपको बताया, you remember one name and one convention. So is there any conservation of migratory species of the wild animal, some convention related to that? माइग्रेटरी स्पीशीज मीन्स जो एक जगह से दूसरी जगह में माइग्रेट होते रहते हैं, विच कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड माइग्रेटरी स्पीशीज एंड देयरफॉर वाइल्ड एनिमल माइग्रेटरी स्पीशीज. तो वो कहां से कहां तक माइग्रेट होते हैं, उसका रिलेटेड जो कन्वेंशन था दैट वाज बॉर्न कन्वेंशन. So it was Bonn Convention of Migratory Species of Wild Animals, right? So conservation of migratory species of wild animal. So Bonn Convention is related to that. Next is Ramsar Convention, very very important friends. Wetland जैसे हमारा ये जो वेटलैंड है, दैट इज गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है, दैट इज वेटलैंड इज बेसिकली जैसे मैनग्रोव्स होते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का जो वेजिटेशन है वो सारे का सारा वेटलैंड है. तो रामसर कन्वेंशन एक ट्रीटी है जो वेटलैंड के साथ डील करती है और यूज ऑफ वेटलैंड और उनके रिसोर्सेज के साथ डील करती है. तो रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू दैट. रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू द वेटलैंड्स which are used in which wetlands which are important ecosystem. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैनग्रोव्स जो होते हैं जहां पे सी का किनारा एरिया है या जहां पे डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का पानी मिलता है आपस में, तो वो सारे के सारा वेटलैंड का एरिया होता है. तो वेटलैंड इज बेसिकली इंपॉर्टेंट वेजिटेशन, इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम. तो रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू दैट. इंपॉर्टेंट है ये कन्वेंशन. क्योटो प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कल मैंने कुछ इंटरनेशनल लॉज आपके साथ डिस्कस किए थे. रियो डी जेनेरो 1992 बहुत इंपॉर्टेंट था. उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल आया. क्योटो प्रोटोकॉल में पहली बार लीगली बाइंडिंग सैंक्शंस लगाए गए, लीगली बाइंडिंग थे वो डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर. उनको बोला गया कि तुम ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करो. तो पहली बार ऐसा हुआ था एंड दैट वाज अडॉप्टेड इन ईयर 1997. बट क्योटो प्रोटोकॉल एक्चुअली केम इनटू फोर्स इन 2005. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अडॉप्ट तो हुआ था 1997 में, बट इट केम इन फोर्स इन 2005. इट इज इंटरनेशनल बेसिकली ट्रीटी जिसने 1992 का जो ट्रीटी था उसको एक्सटेंड किया था. यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को एक्सटेंड किया था. तो क्योटो प्रोटोकॉल इज एक्चुअली रिलेटेड टू दैट. तो Kyoto Protocol, Kyoto is a place in Japan and it entered into force in Feb 2005. Okay, next is which protocol aims to share the benefit arising from utilizing the genetic resources. तो ऐसा कौन सा protocol है which aims to share the benefit which arise from utilization of the genetic resources? So that is Nagoya Protocol. All you need to know is Nagoya Protocol related to genetic resources, utilization of the genetic resources in fair and equitable manner. That is Nagoya basically protocol. Nagoya Protocol, which is related to access and benefit sharing of genetic resources. Nagoya Protocol. That is Nagoya Protocol. Okay, so air pollution का एग्जांपल सबसे पहले प्लेनेट अर्थ के ऊपर कब मिला? When we first time realized the effect of air pollution on planet Earth. So air pollution is very very old concept and first time planet Earth पे कब ये
एयर पोल्यूशन हुआ, जैसे ही ह्यूमन बीइंग ने फायरवुड जलाना स्टार्ट किया, एज ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड यूजिंग द फायरवुड, तो एयर पोल्यूशन का कंसेप्ट प्लेनेट अर्थ के ऊपर सबसे पहले देखने को मिला। तो दिस फायरवुड वाज द फर्स्ट, that is 400 BC, that was seen around 400 BC. First, which king or which authority made anti-air pollution law? When was first anti-air pollution law made? And the name was King Edward I. किंग एडवर्ड वन ने सबसे पहले एयर पोल्यूशन के ऊपर एक लॉ बनाया, एंड दैट वाज इन 1273. द फर्स्ट टाइम व्हेन द लॉ वाज मेड, 1273 में पहली बार लॉ बना था. यू अंडरस्टैंड, लॉन्ग बैक जब ये बोला गया दैट कोल कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक हीटिंग, आप कोयले का यूज डोमेस्टिक हीटिंग के लिए आप नहीं कर सकते, ये पहला लॉ बनाया था किंग एडवर्ड ने. So these all questions have been asked in one exam or the other, friends. So they are important questions. So what is the main cause of increase of air pollution? कई बार आपसे पूछेगा एयर पोल्यूशन का मेन कॉज क्या है? What is the main cause of air pollution? Is it infrastructure? Is it water resource, electricity, transport system? So 20th century में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपका लोकोमोटिव भी आता है, ट्रेन भी आता है, कोयले की गाड़ी जो होती थी वो भी आती है, एंड आपका जो इंटरनल कंबशन इंजन ऑटोमोबाइल है वो भी आता है. तो बेसिकली ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ योर एयर पोल्यूशन. सो 20th century मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन वाज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम. दैट इज अ मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. नाउ यू शुड नो, फ्रेंड्स, व्हाट इज प्राइमरी पोल्यूटेंट, व्हाट इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट. प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं, ये आपको कुछ आइडिया होना चाहिए. अभी प्राइमरी पोल्यूटेंट कितने टाइप के होते हैं? इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड हाउ मेनी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर देयर, सो प्राइमरी पोल्यूटेंट कितने टाइप के होते हैं? सो प्राइमरी पोल्यूटेंट आपके जो होते हैं वो नेचुरल एज वेल एज मैन मेड एक्टिविटीज से निकलते हैं. वो आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट कैन बी नेचुरल ऑल्सो, इट कैन बी मैन मेड ऑल्सो. सो 5 जो ग्रीन हाउस गैसेज हमने कल डिस्कस की थी वो सारे के सारे आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स, वोलेटाइल और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड पार्टिकुलेट मैटर, ये आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं. दीज ऑल आर योर प्राइमरी पोल्यूटेंट, नेचुरल एज वेल एज मैन मेड. कुछ इसमें नेचुरल हैं, कुछ इसमें मैन मेड हैं, बट दीज आर द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स. These are called primary pollutants. इनके नाम याद रखना. They are very very important and primary pollutants. And what are the secondary pollutants now? Secondary pollutants जो chemical reaction से बनते हैं, they are called secondary pollutant. The pollutant which are from the secondary chemical reactions. Primary pollutants are which are available in the nature or which are man-made but not through chemical reaction. Secondary are जो chemical reaction के through बनते हैं. जब प्राइमरी पोल्यूटेंट के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट आर देयर. सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट आर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, क्रोनिक एसिड्स, दीज आर सेकेंडरी पोल्यूटेंट. तो जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के बीच में कुछ केमिकल रिएक्शन होता है तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर born. तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर नथिंग बट केमिकल बेसिकली रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी पोल्यूटेंट. सल्फ्यूरिक एसिड, तो एसिड रेन जो होती है, एसिड रेन, वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट से होती है. तो प्राइमरी पोल्यूटेंट दैट मींस सल्फर ऑक्साइड्स प्लस वाटर. सल्फर ऑक्साइड एंड वाटर बोथ आर प्राइमरी पोल्यूटेंट, जो आपके वाटर बेस्ड पोल्यूटेंट्स होते हैं. तो प्राइमरी पोल्यूटेंट के बीच में जब केमिकल रिएक्शन होता है तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट आपके बनते हैं, जो आपने नाम देखे. ऐसी कौन सी गैस है फ्रेंड्स जो टॉक्सिक है, लंग्स के लिए हार्मफुल है? So this carbon monoxide is very very harmful for lungs. कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका फॉर्मूला CO है, अगर आप इसको कंप्लीट कंबशन करोगे तो आपके पास CO2 एंड वाटर निकल के आता है. ये आपकी ग्रीन हाउस गैस है, ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है. दैट मींस दिस विल ट्रैप द इंफ्रारेड रेडिएशन. जो सरफेस पे इंफ्रारेड रेडिएशन उनको ट्रैप कर लेती है
और ये आपकी ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन द अदर हैंड ये आपकी बेसिकली एक टॉक्सिक गैस है और लंग्स को ये हार्म करती है। ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, ना इसकी स्मेल है ना इसका कोई कलर है, लेकिन ये हार्मफुल होती है और लंग्स को ये डैमेज करती है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। और ये व्हीकुलर एग्जॉस्ट, मतलब जो आपके व्हीकल्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं, उनसे ये गैस निकलती है। तो व्हीकल से निकलने वाली गैस है। और जो सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकालता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा जो निकलती है वो व्हीकल से निकलती है। दैट यू शुड नो। सूट क्या चीज होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूट? पार्टिकुलेट्स को ही सूट बोलते हैं, SOOT। तो पार्टिकुलेट्स को ही फ्रेंड्स सूट बोला जाता है। तो सूट इज नथिंग बट दे आर द पार्टिकुलेट्स। सूट्स आर नथिंग बट पार्टिकुलेट्स। What are the soot? They are the small pieces of solid materials like dust particles and ash from the industries, और जो एटमॉस्फेयर में फैले होते हैं। तो आप देखो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स या एश पार्टिकल्स, छोटे छोटे एश के पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स जो बेसिकली आपके एटमॉस्फेयर में फैलते हैं, उनको आप सूट बोलते हैं। तो सूट, पार्टिकुलेट्स, डस्ट पार्टिकल्स, दीज आर कॉमन थिंग्स, दे आर द सेम थिंग्स दैट यू शुड नो। पार्टिकुलेट्स जो स्मॉल पीसेस ऑफ सॉलिड पार्टिकल के होते हैं, दे आर कॉल्ड सूट। दीज आर कॉल्ड सूट्स। अब एरोसोल क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरोसोल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरोसोल? Aerosol is a general term friends which is used for particles suspended in the air। पार्टिकल्स जो एयर के अंदर सस्पेंड होते हैं, जैसे आप अगर स्प्रे करो, अगर डिओड्रेंट को तुम स्प्रे करोगे, डिओड्रेंट है, स्प्रे करोगे, वो एरोसोल होता है। दैट मींस छोटे छोटे पार्टिकल, किसी लिक्विड के पार्टिकल जो बेसिकली एयर के अंदर, या सॉलिड के पार्टिकल्स भी होते हैं जो बेसिकली एयर के अंदर अगर वो आपके सस्पेंड हो रहे हैं, तो उन पार्टिकल्स को एरोसोल बोलते हैं। और ये एयर पॉल्यूटेंट होते हैं और एयर को पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। स्प्रेज फ्रॉम प्रेशराइज्ड कैन्स, दैट इज एग्जांपल ऑफ इट। स्मोग क्या चीज है? व्हाट इज SMOG? जोड़ोगे तो आपको स्मॉग मिलेगा। स्मोक प्लस फॉग इज स्मोग। सो एरोसोल जो मैंने आपको बताया, कुछ पार्टिकुलेट्स जो एयर में सस्पेंड होते हैं, जब पानी की ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आते हैं तो वो फॉग बना देते हैं। फॉग इज नथिंग बट, जब फॉग और स्मोक मिल जाती है तो स्मॉग बन जाता है। तो कोई भी पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल जब एयर में घूम रहा है, वो आपका एरोसोल है। जब वो पानी के साथ मिक्स हो जाएगा तो फॉग बन जाएगी, और अगर स्मोक उसमें ऐड हो जाए, स्मोक बन जाएगा। तो ये टर्मिनोलॉजीज फ्रेंड्स, इनको ध्यान से रिवाइज कर लेना। दीज आर कॉल्ड सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज। तो ये एरोसोल, स्मॉग, फॉग क्या चीजें दैट यू शुड नो। नाउ द सेम क्वेश्चन, अगर मैं एरोसोल, सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड पार्टिकल को जोड़ दूं तो क्या बनेगा? अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, देन व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, दैट इज लिक्विड पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल एंड basically aerosol is a mixture of solid or liquid particle, and it's a aerosol mixture of solid और liquid particle। और अगर मैं इसको स्मोक के साथ जोड़ दूं, स्मोक आप जानते हैं क्या होता है, तो स्मोक के साथ मिलके ये सारे के सारे पार्टिकल स्मॉग प्रोड्यूस करते हैं। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट। सबसे ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो किस चीज से रिलीज होती है? व्हीकल, सिगरेट, और किस से रिलीज होती है? Right, so cigarette smoking is the mainly responsible for
I think this is friends for carbon monoxide and not carbon dioxide. This is for carbon monoxide. Cigarette smoking, कार्बन मोनोऑक्साइड व्हीकल से भी निकलती है, बट सबसे ज्यादा जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है वो सिगरेट से रिलीज होती है. दैट इज द रीजन इट इज सो हार्मफुल फॉर द हेल्थ. दिस इज सो हार्मफुल फॉर द हेल्थ. व्हाट इज द कॉज ऑफ अस्थमा इन ह्यूमन बीइंग्स? अस्थमा का कारण क्या है? अस्थमा is basically nothing but it is due to air pollution and it impacts the respiratory problems. जो सांस लेने की प्रॉब्लम्स हैं, जो अस्थमा है, that is related to breathing problem and that further is related to air pollution. So air pollution के अंदर हमने देखा there are so many gases and all, so that air pollution eventually leads to problem of asthma. Is air pollution also cause of plant growth? Answer is yes. Because yesterday we've seen photosynthesis process. There's a photosynthesis process in which the chlorophyll in the plant will capture solar energy and water will be giving you sugar plus oxygen. Now, if there is a air pollution, the plant will be covered with that particular air pollution and photosynthesis process will not take place. So बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन प्लांट ग्रोथ नहीं होता. ये हमने कल भी डिस्कस किया था. बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन देयर इज अ ट्रबल ऑफ प्लांट ग्रोथ. राइट फ्रेंड्स, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर ओजोन डिप्लीशन? ओजोन डिप्लीशन का मेन कारण क्या है? इट इज द क्लोरीन एंड द क्लोरीन इज इन रेफ्रिजरेंट्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. So these chlorofluorocarbons are highly stable and non-inflammable. उनमें they are not inflammable. Fire is not produced. Right. So chlorofluorocarbons eventually they will lead to ozone layer depletion. And Montreal Protocol was signed in 1992. And Montreal Protocol was related to ozone depleting substance. Chlorofluorocarbon is ozone depleting substance. Which of the following is more dangerous to ozone layer? Halogens is similar to chlorofluorocarbon, but it also contains bromine. So halogens are more dangerous to ozone layer compared to even chlorofluorocarbons because halogens contains bromine instead of chlorine. Chlorine no doubt is harmful, but bromine is even more harmful. तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, देखो ओजोन लेयर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओजोन लेयर? जो सन से एनर्जी आती है, एनर्जी फ्रॉम द सन इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एंड ओजोन विल basically protect human being from this ultraviolet radiation. Otherwise this ultraviolet radiation when it will impinge on our body तो हमें स्किन कैंसर होने के चांस होते हैं. तो ओजोन जो है वो प्रोटेक्ट करती है हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से. What is the main reason for skin cancer? Main reason of skin cancer is ultraviolet radiations. So that leads to skin cancer, as I discussed with you. What is oxygen depleting waste? What do we mean by oxygen depleting waste? See, aerobic bacteria, so organic waste
is decomposed by aerobic bacteria. But this aerobic bacteria will make use of oxygen which is present in water to degrade the waste. So this bacteria, aerobic bacteria, will be making use of oxygen और इसलिए वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर जाता है. ये एरोबिक बैक्टीरिया जो है, एक टर्म आप बाद में पढ़ेंगे बीओडी, वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सिविल इंजीनियर जानते हैं. एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन जो होती है पानी के अंदर वो उसको यूज कर जाता है, कंज्यूम कर जाता है और इस वेस्ट को डिग्रेड करता है. व्हाट इज इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन इन वाटर? अमाउंट ऑफ बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एक तो नाम फ्रेंड्स पूरा याद कर लेना. तो वाटर पॉल्यूशन कितना है, पानी कितना गंदा है, सिविल इंजीनियर्स उसका एक टर्म यूज करते हैं जिसका नाम है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर is called biological oxygen demand, BOD. That is called BOD. And the amount of BOD in water is indicator of the level of pollution. Now pH, actually range of pH will tell you what is the acidity in the water and whether the treatment is required or not. After treatment the range is 6.8 to 7.8. so आपको pH की थोड़ी सी रेंज पता होनी चाहिए. फ्रेश वाटर की जो रेंज है pH की, that is 6.8 to 7.8. so somebody asks you what is the fresh water pH, what should be the pH of fresh water, that is 6.8 to 7.8. जैसे से आप उसको एफ्लुएंट में से निकाल देते हो मेटल्स को, तो दिस इज व्हाट इज लेफ्ट. ओके, इसको क्वेश्चन नंबर 31. आई विल जस्ट कम लिटिल लेट बैक टू दिस क्वेश्चन. लेट्स गो फॉर गंगा एक्शन प्लान. गंगा एक्शन प्लान किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था? गंगा एक्शन प्लान किस गवर्नमेंट ने प्लान किया था? किस मिनिस्ट्री ने? दैट वाज डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट. तो गंगा एक्शन प्लान वाज बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट. गंगा एक्शन प्लान स्टार्ट हुआ था आई मीन बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट, अप्रूव्ड बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट कैबिनेट मिनिस्ट्री. एंड गंगा एक्शन प्लान एक्चुअली वाज बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट. दिस वाज बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट. और ये लॉन्च कब हुआ था? व्हेन डिड गंगा एक्शन प्लान व्हेन वाज इट लॉन्च्ड? इट वाज इन 1986. So Ganga action plan is a very important for water pollution. अभी भी गंगा, नमामि गंगा प्रोजेक्ट आप जानते हैं, नमामि गंगा प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन. So Ganga action plan is very important. Ganga action plan was launched in 1986 by Prime Minister Rajiv Gandhi, and the main purpose was to reduce the pollution of river Ganga and improve the water quality. That was the main objective of this Ganga action plan. तो कब स्टार्ट हुआ था गंगा एक्शन प्लान? किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था? Those are important things we should know. ऑब्जेक्टिव क्या था गंगा एक्शन प्लान का? What was the objective of Ganga action plan? In fact, which of the following is not the objective? Water quality, obviously, we wanted to improve. Treatment of domestic sewage, yes. Pollution to reduce, yes. Increase the water content. Now that was not the purpose of Ganga action plan. हम इसके pollution, we wanted to reduce the pollution only. So that was Ganga action plan.
So increasing the water content was not the purpose of Ganga action plan. Okay, so how many primary characteristics we have to classify waste as hazardous waste? Now waste अलग अलग type का होता है friends. Some waste is hazardous waste also, where maybe there is a toxicity or there is some kind of chemical or corrosive nature of that particular waste. So how many primary characteristics are there? So waste is classified as hazardous if it displays one of the four primary characteristics. What are those? It toxicity, reactivity, ignitability and corrosivity. Ignitability means ignite हो जाएगा, corrosivity means उसमें corrosion है, reactivity means react करेगा. So these are the four factors on the basis of which you categorize it to be the hazardous waste. Okay, so these are the four basically factors. Which of the following is hazardous substance? इन चारों में से hazardous substance कौन सा है? Obviously, copper, iron, gold, they are not hazardous. You are using these particular metals, but yes, lead has some kind of hazardous nature. It is the substance which is heavy metal. This is a heavy metal, and you can easily obtain it. But it is when it is most of the lead which is absorbed by people is stored in the bones, and it is creating some kind of trouble in the bones. So lead is the hazardous substance, friends. Lead is the hazardous substance. You all know what is WWF, World Wide Fund. World Wide Fund India was part of WWF, and when was it created? So which year it was created, and what is WWF, World Wide Fund? So World Wide Fund India is actually conservation organization, and it is a charitable trust. It was created, and it was created in 1969. World Wide Fund was created in 1969. Now this Wildlife Protection Act was implemented in India in 1972. मैंने आपको बताया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और प्रोजेक्ट टाइगर. You remember these 2 years as 1972. Project Tiger, and then Wildlife Protection Act. ये दोनों ही आपका सेम ईयर में आए थे. इनफैक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का ही एक उसका आउटकम था, दैट वाज प्रोजेक्ट टाइगर. तो प्रोजेक्ट टाइगर वाज द आउटकम ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एंड उसका अभी हमने एनालिसिस किया आफ्टर सो मेनी इयर्स. सो द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर्स हैव इंक्रीज्ड, और जब ये आया था देन द मेन एम्फेसिस वाज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टाइगर्स, जो उस टाइम पे बहुत एंडेंजर्ड स्पीशीज बनने वाला था. सो नाउ इट इज protected and it is there. Okay, so what is the scheme to protect and conserve the biodiversity? Which scheme is there to protect and conserve the biodiversity? Okay, so bioreserve. See, biosphere, bioreserve, नाम के साथ रिजर्व लगा हुआ है. टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, आपको नाम से पता लग जाएगा. बायोरिजर्व, reserve is basically you will not let that particular area to be used for some commercial activity. So bioreserve is basically that zone where you cannot do any kind of commercial activity, and you will protect the biodiversity. फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट किया जाता है बायो रिजर्व एरियाज में. तो आप देखोगे इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पे बायो रिजर्व एरियाज हैं. ग्लोबल वार्मिंग कौन कॉज करता है? विच गैस इज प्रोड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग? विच गैस इज प्रोड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग? विच गैस इज प्रोड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग? विच गैस इज प्रोड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग? Carbon dioxide is the gas which produces the global warming, and it is a greenhouse gas. So that means 75% of the solar energy which is reaching Earth's surface
earth will, as we know that the radiation, when it comes from the solar radiation, it is of ultraviolet nature. When it is reflected from the surface of earth, it becomes infrared, और वो infrared radiation gets absorbed by some gases, और कार्बन डाइऑक्साइड मेजर गैस है उसकी, और वो अर्थ की सरफेस को टेम्परेचर को बढ़ाती है. अभी तक प्री इंडस्ट्रियल टाइम मैंने आपको कल भी बताया था, दैट इज 1850 से पहले के टाइम को हम प्री इंडस्ट्रियल टाइम बोलते हैं, बिफोर 1850. सो कंपेयर टू 1850 व्हेन वी स्टार्टेड यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, जब हमने फॉसिल फ्यूल्स को यूज करना स्टार्ट किया, उससे पहले के कंपैरिजन में अभी तक हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड वी हैव इंक्रीज्ड, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 30%. सो 30% कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज हो चुका है, and that is the reason global warming is visible. You can feel global warming this summer in India. So 30% increase in carbon dioxide since pre-industrial time. So this full form of United Nations Framework Convention on Climate Change, you people are already aware what is UNFCCC, that is United Nations Framework Convention on Climate Change. And the purpose of United Nations Framework Convention on Climate Change was to control the global warming and not to let the climate change. So that was the main purpose of United Nations Framework Convention on Climate Change, and that was one of the agendas of Rio de Janeiro. So Rio de Janeiro का जो outcome था, that was United Nations Framework Convention on Climate Change. Who will measure the global warming, which actually what is the name of the professional who is associated with measurement of the global warming rate? I mean, at what rate global warming is taking place? So climatologist is the name of that professional which will measure this, and they have predicted that temperature is going to rise in 21st century, in which we are presently, by 3.5 degree to 10 degree centigrade. And yesterday I discussed with you Paris Agreement. पेरिस एग्रीमेंट में ये बोला गया था कि टेम्परेचर को आपको 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं जाने देना है, बट हियर इट इज सेड 3.5 टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड. सो यू अंडरस्टैंड नाउ, जहां पे भी टेम्परेचर 45 होता है, अगर वो 50 हो जाए या 55 हो जाए, सो यू अंडरस्टैंड वेयर द सिचुएशन विल गो. सो दैट इज द क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने प्रेडिक्शन किया है रेट का. Which of the following result takes place during global warming? So what is the offshoot of global warming? क्या होता है global warming में? Result क्या होता है global warming का? Steady temperature, no. Change in rainfall, it may be. Pleasant environment, certainly not. Causing less pollution, no. So rainfall pattern भी change होता है, weather change हो जाता है, आप जानते हैं. So change in the pattern of weather is also the outcome of global warming. So global warming का ये outcome है, offshoot है उसका. So yes, the rainfall, La Nino, El Nino, you people know that monsoon gets affected by global warming, और climate change उसी को बोलते हैं. तो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आर वेरी क्लोजली रिलेटेड कंसेप्ट्स. ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज होता है, और ला नीनो अल नीनो का इंपैक्ट पड़ता है. कई जगह पे ड्रॉट आ रहा है, कई जगह पे फ्लड आ रहा है. दैट इज द रीजन फॉर दैट. Which one of the following will lead to global warming? Which one of the following will lead to cause global warming? आप एलिमिनेशन भी लगा सकते हो. अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको चेंज नहीं करता, ऑक्सीजन चेंज नहीं करता, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चेंज नहीं करता. रेडिएटिव फोर्सिंग एक टर्म होती है. रेडिएटिव फोर्सिंग, जो रेडिएंट एनर्जी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना उसका, दैट इज रेडिएटिव फोर्सिंग, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक फैक्टर्स. राइट. सो ग्लोबल वार्मिंग विल बी बिकॉज ऑफ द चेंज इन द फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन रीचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ. अभी कितना रेडिएशन, सोलर रेडिएशन कितना पहुंचता है सरफेस ऑफ अर्थ पे, वो कंसेप्ट आपका रेडिएटिव फोर्सिंग है, कि रेडिएशन, कितना रेडिएशन अर्थ के सरफेस तक पहुंचेगा, और जितना रेडिएशन अर्थ के सरफेस पे पहुंचेगा ऑब्वियसली रिफ्लेक्टिविटी और ट्रैप उससे रिलेटेड होगा. तो रेडिएटिव फोर्सिंग ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है, और रेडिएटिव फोर्सिंग बहुत सी चीजों पे डिपेंड करता है. रेडिएटिव फोर्सिंग मींस कितना रेडिएशन, सोलर रेडिएशन अर्थ के सरफेस पे पहुंचेगा और वहां पे रहेगा, बाकी निकल जाएगा. So Gana Prakash, if you are from electrical, it is not for you. This lecture is
for mechanical engineers, those who are going to write HPCL. How human activity has influenced global warming? तो ह्यूमन एक्टिविटी का ग्लोबल वार्मिंग पे क्या इंपैक्ट पड़ा है? बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता, कम होता है. चेंज इन ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट नहीं, वही रेडिएटिव बैलेंस गवर्निंग अर्थ. सो रेडिएटिव बैलेंस वही है जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि रेडिएशन जो है, सोलर रेडिएशन, उसका एक बैलेंस होता है. द सोलर रेडिएशन शुड बी trapped by gases and it should be reflected from the surface. So there is a balance which is to be maintained by the radiation. If it is not maintained, then obviously it is going to create some kind of global warming, and that is something which is leading to the global warming problem on surface of earth. Which of the following land use causes global warming? इनमें से कौन सा ऐसा लैंड यूज है जो ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस करता है? आई मीन द यूज ऑफ द लैंड. Increase in fertility of soil, surface reflectance, forestation, adopting organic farming. Now what is the meaning of this is, when when solar radiation comes and it falls on the surface of earth, how global warming gets affected? So just imagine, when we say instead of forest, now you are making concrete jungles. Concrete jungles means the buildings which are made up of concrete and reflecting materials. Lot of vehicles with metallic surface and reflectivity is more. So more the energy gets reflected, more it gets trapped in the greenhouse gases and global warming is more. So reflectivity अगर चेंज कर दोगे आप सरफेस ऑफ अर्थ का, कैसे चेंज करते हो? ट्रीज को कट करके मेटल बना दो, रोड बना दो, बिल्डिंग बना दो, गाड़ियां चला दो उसके ऊपर, तो वो आपका रिफ्लेक्टिविटी चेंज करेगा एंड ग्लोबल वार्मिंग गेट्स अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. Which one of the following is important heat trapping gas? Obviously carbon dioxide सबसे important gas है, greenhouse gas. Carbon dioxide is the most important greenhouse gas. Which one of the following is the reason for sea level rise? Sea level कैसे बढ़ता है? Is it because of depression of sea water? Which one of the following is the reason for a sea level rise? नहीं, depression तो नहीं हो सकता. Expansion of sea water कैसे होता है? Due to heavy rainfall, due to low rainfall? No, it is not because of that. Now what is expansion of sea water? Expansion of the sea water simply means, we know that North Arctic and Antarctic, we know Arctic, Antarctic polar caps, ice caps, and these ice caps gets melt because of the global warming. जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइस मेल्ट करेगा, आइस मेल्ट करेगा तो water will go into the oceans and the ocean water will eventually increase. That is the cause of this, that is a cause of this expansion of sea water. So sea level rise is because of this. What is full form of IPCC? Okay, so just that is right. I think your point is correct, Sahil. तो आप इसको एक बार, ये वीडियो जो है ये अवेलेबल रहेगा, दिस वीडियो विल बी अवेलेबल टू यू ऑन यूट्यूब. एक बार दोबारा से इसको देखना आप. आई जस्ट वांट टू कवर मोर क्वेश्चंस. आप इनको क्वेश्चंस को, व्हेन यू सी दिस वीडियो, you stop this video and try to answer these questions, right? So what is the full form of IPCC? Intergovernment Panel on Climate Change. आपको ये टर्म्स याद करनी है. So what is government panel on climate change? It is basically the organization which is created to note down, to observe the climate change phenomena in particular country. Is food production also get affected by climate change? How the food production gets changed by climate change? How food production gets reduced due to climate change? Yes, not because of anything else, but due to increase in pest.
देखो ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट पेस्ट के ऊपर पड़ता है। जब ग्लोबल वार्मिंग होगा या देयर आर पॉजिटिव पेस्ट, देयर आर नेगेटिव पेस्ट, ग्लोबल वार्मिंग होगा तो उसका इंपैक्ट हर चीज के ऊपर पड़ता है, इवन ऑन द पेस्ट। तो जब पेस्ट के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ेगा, देन दैट इज गोइंग टू फर्दर इंपैक्ट द फूड प्रोडक्टिविटी और दिस फूड प्रोडक्शन due to increase in the number of pests and other plant or animal diseases. Climate change has the impact on this. आपने देखा होगा कि पहले earlier the fruit was not destroyed by the pest and some kind of harmful these insects or harmful pest. It used to be good, it used to be eatable, you used to eat it comfortably, but now because of this all, the lot of pests are damaging the production, food production, and pest control is to be used a lot. Friends, now I think a couple of more questions I am giving you. These questions you can revise, and these are, you can stop your this document. There are a couple of more questions for you related to Kyoto protocol. There are 70 questions. I'll try to cover these questions in the next class for you. So these 50 questions I wanted to take today. So these are the 50 most important questions for you related to energy and environment, which is important topic for all of you. Please revise these questions. They are very, very important questions from energy and environment. And this is the part of many of you are asking what is this topic all about. This engineering substances preliminary topics have been added as a syllabus of HPCL exam. And today we were doing questions from basics of energy and environment, and this was basics of energy and environment is one of the topics of HPCL mechanical engineering. So you are watching the live classes of these topics so that you get an idea what is to be done. Please keep revising these topics. They're very important for your exam. If you're going to write HPCL exam, don't forget to go through these topics. These all topics are part of your module of HPCL which YourPedia is providing you. In case you have not taken, you can always go for that module. All the very best, friends. I'll catch you tomorrow. Thank you.